Hello students. Welcome to my channel once again. It's me Neil Ghosh, your ISC instructor and tutor. So today we are going to cover a new chapter of our geography syllabus of class 12 ISC, and the name of the chapter will be climate, which is a big chapter and a very important chapter as per as your ISC 2024 syllabus and examination. So we are going to be in details of the chapter thoroughly. This chapter will take some time, but if you can grab the knowledge, grab the concept of this chapter, then it's one of the easiest chapter to score marks, and most of the questions are frequently asked from this chapter. So you are not seeing a blackboard or a board beside me, but you are going to see in the next clip. So if someone is being new to my channel, as you already seen that my channel is growing day by day and I loving the support that you are showing, so please do support more with sharing this video as much as possible for those who need actually the knowledge and the facts which have been given here, which is truly based upon true guided information. So the very first topic we're going to cover is the factors that affect the Indian climate and temperature. What are the factors that affect the Indian climate and temperature? There are several factors. So firstly, the first factors are the location is very important, means the latitudinal and the longitudinal extent of India, the distance from the sea, the temperature, then if you speak the physiography, all of these include a very important parts which affect the Indian climate and temperature. If we come to the topic, what is the latitudinal and longitudinal extent, then you have to say the very famous proverb is that we have to say that line of India is belonging to latitudinal and longitudinal extent. Latitudinal extent of India lies from, so see, India has type of monsoon climate. What is the type of monsoon climate? The term monsoon comes from the Arabic word mausim, which means that reversal change of seasons, reversal change of seasons of wind during the course of the year. मतलब जो season change होता है हर साल, उसके बारे में बताया जा रहा है. So what is the latitudinal and longitudinal extent of India? The latitudinal extent of India lies from 6 degree north to 37 degree north latitude, and the latitude which passes through the Tropic of Cancer through the middle of the country. What is the distance from the sea? The southern on the peninsular India is surrounded by the Arabian Sea, the Indian Ocean and the Bay of Bengal. ये तीनों से surrounded है. And the coastal regions of India is equatable or maritime. मतलब equatable और maritime coastal effect रहता है. यहाँ पर एक बहुत important question है, why India does have a continental type of climate? India continental type of climate क्यों है? The regions located in the interior of the country is equatable or maritime in the interior of the country, but they are deprived of the moderating influence of the sea. In the interior of the country, they are equatable or maritime, lekin they are deprived, they are not doesn't come under the moderating influence of the ocean. What's the role of the northern mountain ranges? The Himalayan and the adjoining mountain ranges, which extend from Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the northeast, separate India from the rest of Asia. वही separate करते हैं India को rest of Asia से. And they blew bitterly cold winds of Central Asia. Central Asia का bitterly cold winds that flow over there. And the physiography is the physical features, that is the climate, the temperature, the pressure, the direction of wind, the amount of rainfall. It all lies in the physical appearance or the physical features of the climate. There is a funnel-shaped hill along the steep southern edge of the Meghalaya. Meghalaya plateau force the moisture-laden monsoon winds from the Bay of Bengal to rise suddenly and make Monsoon the rainiest place in the world. So very important question once again, that why Monsoon is the most received rainfall area in the world? Because in steep southern edge, जो steep southern edge होता है,
in steep southern edge there is a funnel shaped, एक funnel की तरह shape हुआ in the steep southern edge, and the moisture laden winds. Why मौसम क्यों है? क्योंकि जो funnel shaped hills है along the steep southern edges of the Meghalaya plateau force the moisture laden winds to move over the Bay of Bengal and suddenly rise, and that makes Monsoon the most rainiest place in the world. So that is the reason behind it. So the places which are closer to the Tropic of Cancer receives most heat from the receives most heat from the sun, as it is closer to the Tropic of Cancer, and those which are not closer to the Tropic of Cancer or the equator, they receives bitterly cold. And those northern mountain ranges also protect, not only it separates India from the rest of Asia, but it also protects us from the bitterly cold that and the very cold winds that comes from the southeast, from the Asian winds. It protect us and it's act as a barrier. And the climate of India is the air, the temperature, the atmospheric pressure, the direction of winds, and the amount of rainfall, and all of that comprises together, they influence the climate of India. So in the physiology of the factors, there are also an important part, that is the funnel shaped hills along the steep southern edges of the Meghalaya plateau force the moisture laden winds from Bay of Bengal to rise suddenly in the Arabian Sea, and make Monsoon the rainiest place in the world. तो ये क्या क्या कहा जा रहा है कि जो फनल शिफ्ट स्टीप स्लोप्स है साउदर्न एज में, वो मेघालय का जो एज है वहाँ पर जनरली जनरेट होता है, एंड इट जनरेट्स ऑल्सो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड मेक इट हैपन। बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर लेडन विंड्स जनरेट होता है वही जाके मौसम ग्राम में, वही क्लाउड्स, वही विंड्स जाके मौसम ग्राम में मतलब बारिश के तहत गिरता है। इट फॉल्स एज अ रेनफॉल एंड मेक्स मौसम ग्राम द मोस्ट रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। Then the Western Ghats present an effective obstacle in the way of southwest monsoon coming from the Arabian Sea and cause heavy rainfall in the coastal plain, west coastal plain। क्या कहा गया कि वेस्टर्न घाट जो प्रेजेंट है वो एक इफेक्टिव ऑब्स्टकल है साउथ वेस्ट मानसून के लिए, एक इफेक्टिव ऑब्स्टकल है फ्रॉम अरेबियन सी। और ये बहुत रेनफॉल कहाँ पर घटाता है? अरेबियन सी से ये आते हैं, और ये कहाँ पर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑकर ऑफ वेस्टर्न घाट दैट एक्ट्स एज एन ऑब्स्टकल, इट फॉल्स डाउन एज एन रेनफॉल इन वेस्ट कोस्टल प्लेन। And the next part, the next factor that affect the India's climate is the monsoon winds. The complete reversal in the direction of winds brings India about a sudden change in the season, and harsh summer season suddenly give way to eagerly awaited monsoon of the रेनी सीजन। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो कंप्लीट जो रिवर्सल है, मतलब जो चेंज होता रहता है मॉनसून में इंडिया में, वो एक सडन चेंज लाता है समर सीजन में। और वो क्या चेंज है जो बहुत दिनों से वेट करता रहता है? क्या? रेनी मॉनसून सीजन जो बहुत दिनों से वेट करता रहता है, आफ्टर समर इट हैपन्स, एंड these winds change their direction completely. These winds change their direction completely and are called monsoon winds, क्योंकि monsoon winds अपना direction कभी भी change कर सकता है according to season and according to time। जैसे हम देखते हैं ना कि यहाँ पर बारिश हो रहा है, वहाँ पर बारिश नहीं हो रहा है कुछ जगह में, तो इसलिए वो कभी भी चेंज हो सकता है। So it's called monsoon winds, and it comes under the far-reaching influence of India's climate and termed as monsoon टाइप ऑफ क्लाइमेट। और ये इंडिया का क्लाइमेट में भी इफेक्ट करता है, और इसका नाम इसलिए मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी है। एंड बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मॉनसून रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून एंड इट्स इफेक्ट। क्या है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और उसका इफेक्ट क्या है? तो ये हम अब जानेंगे। ड्यूरिंग विंटर द वेदर कंडीशन आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय हाई प्रेशर एरिया डेवलप्ड बाय द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब विंटर के टाइम में वेदर कंडीशन is being influenced by what? By the high pressure
हाई प्रेशर के लिए वेदर कंडीशन चेंज होता रहता है, इन्फ्लुएंस होता रहता है, विच डेवलप कहाँ पर डेवलप होते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। एंड इसके मतलब व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस, दैट cold dry winds originate and it move towards the southern low pressure areas lying over the bodies surrounding peninsular India। मतलब इसके मतलब जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो जनरेट होता है हाई प्रेशर, उसके what is the result of it, cold dry winds occur in the region of the southern low pressure areas में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जो हाई प्रेशर एरिया रहता है, उसके वजह से क्या होता है कि साउदर्न पार्ट में लो प्रेशर एरिया में वाटर बॉडीज जो रहता है वो इंडिया को सराउंड करता है। सी आई एम लूसिडली एक्सप्लेनिंग इट। यहाँ पर क्या कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून और उसका इफेक्ट क्या है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो विंटर में जो वेदर रहता है, वेदर कंडीशन आर जनरली इन्फ्लुएंस बाय हाई प्रेशर विच ऑकर, हाई प्रेशर के वजह से वेदर इन्फ्लुएंस होता है, वेदर चेंज होता है, विच ऑकर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होता है डेवलप ये हाई प्रेशर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट, कोल्ड ड्राई विंड्स ऑकर टुवर्ड्स द साउदर्न लो लाइंग एरियाज। साउदर्न में जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू दैट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। और कहाँ पर होता है, जनरली विच सराउंड्स इंडिया, और ये लो प्रेशर क्रिएट होता है ओवर द वाटर बॉडीज विच सराउंड्स इंडिया फ्रॉम ऑल द 3 sides and acts as an peninsular India। Since these are cold dry winds होने के तहत this doesn't cause rainfall and the weather condition under the influence remain cold and dry। and weather condition under this atmosphere क्या रहता है, cold and dry, क्योंकि cold and dry तो है टेम्परेचर, मानसून टाइप कोल्ड एंड ड्राई तो है, टेम्परेचर एंड क्लाइमेट टाइप, तो जनरली जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो भी कोल्ड एंड ड्राई टेम्परेचर ही फील करते हैं। तो सी व्हाट्स नेक्स्ट हैपन, उसके बाद क्या होता है, दिस नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स कलेक्ट मॉइस्चर वाइल पासिंग। ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स है, इट्स कलेक्ट मॉइस्चर जब ये पास होता है कहाँ पर, फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड ब्रिंग रेन टू द कोरामंडल कोस्ट। जब ये बे ऑफ बंगाल से होकर पास होता है, इट ब्रिंग्स रेन टू द कोरामंडल कोस्ट। So up to this northeast monsoon is enough and its effect we have understood. So now if we move to the next part, the next factor is that the southernmost monsoon and its effect, the southwest monsoon and its effect. So what is the southwest monsoon and what is its effect? During summer, वो विंटर का बात कर रहा था, ये समर का है। During summer, the northwestern part of India become very hot due to high temperature। northwestern part जो है इंडिया का बहुत ह्यूमिड, बहुत हॉट रहता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। This is described to apparent shift. For this, there was an apparent shift of sun in the northern hemisphere। एक apparent shift होता है sun का northern hemisphere पे। Trade winds, if we talk about the trade winds are replaced by the southwest monsoon। trade winds को कौन replace करता है, southwest monsoon। Since these winds are sea bearing and blow warm water bodies before reaching land, they are moisture laden, causing widespread rain to the most parts of India। This period of southwest monsoon from June to September is known as the rainy season for most of the part of the country। तो क्या कहा गया ट्रेड विंड के बारे में, ट्रेड विंड इज बीन रिप्लेस्ड बाय द साउथवेस्ट मानसून विंड्स। ये विंड्स है सी बियरिंग एंड इट ब्लो ओवर द वार्म वाटर बॉडीज। जब ये वार्म वाटर बॉडीज के ऊपर से ब्लो होता है तो बिफोर रीचिंग टू द लैंड दे आर मॉइस्चर लैडन, मतलब जो मॉइस्चर है वो सब गिर गया नीचे बिफोर रीचिंग टू द लैंड, एंड विच कॉज वाइड स्प्रेड रेन इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री। जिसके तहत बहुत बारिश होता है, क्योंकि मॉइस्चर ही तो नहीं है ना, मॉइस्चर तो सब नो, इट पिक्स अप द मॉइस्चर आफ्टर गोइंग, सॉरी आई हैव टोल्ड opposite thing, when it goes over the warm water bodies it picks up the moisture and it becomes moisture laden winds। ये हम किसकी बात करें, ट्रेड विंड्स, जिसको साउथ वेस्ट मानसून रिप्लेस कर गया।
So it picks up the moisture from the warm bodies and while blowing over the warm water bodies, and before reaching to the land, these are moisture laden winds which brings rain to the most part of the country of India. This period of southwest monsoon to June to September is considered as the rainy season for most of the part of the country. And the sixth factors that affect the India's climate is the upper air circulation. So what is the upper air circulation? The changes over the upper air circulation the changes in the upper air circulation over Indian landmass is yet another main reason of the outbreak of the monsoons in India. ये भी एक वाइटल कॉज है कि मॉनसून आउटब्रेक कैसे होता है, क्यों मॉनसून आता है, why do monsoon comes in India, at what time. It also plays a vital role in it. What? The upper air circulation. The jet streams in the upper air circulation influence the climate of India in different ways. Jet stream in the upper air circulation बहुत तरीके से influence करता है the climate of India, and jet streams are specifically divided into two parts, the easterly jet stream and the westerly jet stream. At first we'll move on to the first part, that is the westerly jet stream.